Good evening, students, and let's discuss today's assignment. Question number 1 is, what is the state of cell shown in the diagram? This is a plasmolyzed cell, so the condition or the state which is shown in the diagram is flaccid condition. Flaccid condition means the cell in which water is loose or the cell is not charged with water. Second answer is that name the structure that acts as a selectively permeable membrane. That is cell membrane. Cell membrane acts as a selectively permeable membrane. It means it allows selected materials to pass. And next question is, label the part 1 to 4. Wait. Label the part 1 to 4. Now look on the diagram. Part 1 is, this is the outermost layer. This one is the outermost layer. This outermost layer is cell wall. क्या है ये? Cell wall है. This one. Second is this second one. This is sugar solution. Okay. This area is sugar solution. The third one is, this is cell membrane, and this fourth one is nucleus. Now look here and try to understand this diagram further. This is cell wall. Okay. When this cell placed in hypertonic solution, I am not able to draw very good diagram because this pen is not working very well. Okay, this one is cell wall. I hope this is clear to you. So first answer is, in this, first answer is cell wall. Okay, any doubt in this first one? ठीक है. Second part, part 2 is this part. अब इधर देखिए, जब आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो जो इसका सेल मेम्ब्रेन था, ये सेल मेम्ब्रेन पूरा श्रिंक होके यहाँ चला गया. ओके, ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. लेट मी टेक रेड इंक. दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल वॉल क्योंकि परमिएबल होता है, क्योंकि फ्रीली परमिएबल होता है, it allows sugar solution to enter. So sugar solution will accumulate between cell wall and cell membrane. यहाँ पर part 2 क्या होगा? sugar solution होगा. part 2 is sugar solution. You may write hypertonic solution भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा. Okay, part 3 is cell membrane. This one is cell membrane. ये आपको क्लियर हो गया. And part 4 is nucleus. Okay, so in this diagram, don't go for any further explanation of any other part of the cell कि आपको मुझे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया लग रहा है या कुछ भी है. हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान से समझें. These part, ये जो छोटे छोटे से ये बने हुए हैं, this one, this and this, all these are chloroplasts. So sometimes there will be two labeling only. Either they will ask for the nucleus or the chloroplast only, and 99% they will ask for nucleus. Question number 1, fourth. How can the above cell brought back to original condition? Now original condition में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस करने के लिए हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा. नाउ वी विल कीप दिस सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. एक सेकेंड. वी हैव टू कीप इट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर. So what is your answer? Keep cell in hypotonic solution or in distilled water. What is the second part? Mention the scientific term for the recovery of the cell. The scientific term is deplasmolysis. Deplasmolysis. Clear?
Next question is, state any two feature of the above plant cell which is not present in animal cell. ऐसी कोई दो चीज़ें बताइए इस प्लांट सेल में से जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है. One is cell wall. Animal cell does not contain cell wall. And number two is chloroplast. Okay, cell wall and chloroplast are not present in animal cell. Now, sometimes students write that other answers like they wrote about lysosome, about vacuole and other things. आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, स्टेट एनी टू फीचर ऑफ द अबव प्लांट सेल. ये जो प्लांट सेल दिया हुआ है ना, इसके बारे में बताना है आपको. एक नॉर्मल प्लांट सेल के हिसाब से नहीं बताना है. तो इस प्लांट सेल में आपको सेल वॉल विजिबल है जो एनिमल सेल में नहीं होती है. आपको इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट विजिबल है जो एक एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है. सो योर आंसर इज सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A candidate, in order to study the process of osmosis, has taken 3 potato cubes and put them in a 3 different beaker. After 24 hours, in the first beaker, the potato cube increased in size. इसका मतलब उसने water absorb किया है. In the second beaker, the potato cube decreased in size. उसका volume कम हुआ है. इसका मतलब potato से water content बाहर आया है. And in third beaker there was no change. So what is your observation? What are your answer? The technical term for the solution used in beaker 1 and beaker 2. In beaker 1, sorry, this beaker is hypotonic in nature. This one beaker 1 is hypotonic. Beaker 1 is hypotonic because in this solution they will absorb water and it will become swell. In second, if it is shrink, it means we keep it in hypertonic solution. And the third, if there was no change, it means it was isotonic solution. Clear? Our second question is, in beaker 3, the size of potato cube remained the same. Explain the brief in this answer. Okay, in second part, if they remained same, it means there was no net movement. Okay, the solution is isotonic. Okay, so there is no net movement of solvent molecule. This answer is more than sufficient. Next question is, write the specific feature of cell sap of a root hair which help in absorption of water. कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था. इसके हमने बड़े सारे पॉइंट डिस्कस किए थे. सेल सैप ऑफ रूट हेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा होता है तभी वो वाटर आजू बाजू से लेता है. इसी का सेकेंड पार्ट आप क्या लिखेंगे? रूट हेयर इज यूनिसेल्यूलर, ये आप लिख सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर. This also you may write. How does the cell wall and cell membrane differ in the permeability? The same question we have discussed yesterday. Cell wall is freely permeable. एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से पेपर में जरूर आता है. एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. ये तो परमिएबिलिटी के हिसाब से हुआ. If the question based on the nature, then cell wall is made up of cellulose and cell membrane is made up of protein and lipids.
एक और आप पॉइंट देख सकते हैं, सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, डेड होती है. सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This we have discussed. Okay, the given diagram represent a layer of a epidermal cell showing a fully shown root hair. Label the part A, B, C, D. More or less same kind of question we have done yesterday. Part A is cell wall because it is the outermost layer. Part B is cell membrane because it is the inner layer. Part C is cytoplasm. थोड़ा इसमें ध्यान से देखना पड़ता है, कई बार ना समझ नहीं आता. एंड D is nucleus. I told you earlier 90% inside the cell they will ask for nucleus. Okay. Second part is, wait बच्चों, मैं आपको नंबरिंग सही से कर दूँ, अदरवाइज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. दिस वन इज A आंसर. Okay, second question. The root hair is in a turgid state. Turgid state means it is fully charged with water. Name and explain the process that caused this state. It is endoosmosis. रूट हेयर कब टर्जिड होगा, कब वो उसके अंदर पानी होगा, इसका मतलब उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है. कंडीशन इज endoosmosis. And now question is, in what kind of water it will be there when it will go for endoosmosis? It means it is in pure water, it is in a hypotonic solution. Root hair is surrounded by hypotonic solution, surrounded by water, that is hypotonic solution, right? Okay, next answer is, mention one distinct difference between A and B. Again, A and B already we have discussed, cell wall and cell membrane. So cell wall is freely permeable, and cell membrane is selectively. Okay, permeable. और ये अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा. What is the next question? Draw the ray diagram. Draw the diagram of above hair cell. It would appear when a concentrated solution of fertilizer is added. More or less same kind of question we have discussed yesterday also. So it is a very simple diagram. What you have to draw in this diagram is, first draw a root hair. This is a cell wall. When it is placed in a fertilizer, तो ये थोड़ा सा ड्रूप हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाएंगे. Okay, this is cell wall you have drawn. Now draw the cell membrane. और क्योंकि फर्टिलाइज़र ऐड करने पे काफ़ी श्रिंकेज हो जाती है, ऑलमोस्ट प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, तो इसको थोड़ा श्रिंक करके ही आप बनाएंगे, राइट. नाउ इनसाइड इट देयर इज़ अ वैक्यूल. वो भी श्रिंक हो चुकी है क्योंकि वैक्यूल में से ही पानी निकला था. एंड देयर इज़ अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. क्लियर? सो दिस पार्ट इज सेल वॉल. This one is cell membrane. Between the cell wall and cell membrane there will be hypertonic solution. Okay, now move to the next question. There is a diagram. What is the technical term for the condition of cell A and cell B? Let's move to the another question. Okay, now in these two diagram it is very clear, cell A जो है वो टर्जिड कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है, और सेल बी जो है उसमें क्या है, ये फ्लेसीड हो चुका है. ये आपका सेल वॉल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. अभी ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये बिल्कुल फ्लेसीड हो चुका है. अंडर व्हाट कंडीशन द सॉइल
will the root hair will resemble like cell A. Cell A के जैसे कब दिखाई देगा? When the root hair is fully charged with water, यानी कि hypertonic solution है. और B के जैसे कब दिखाई देगा? When there is a more fertilizer और hypertonic condition या sugar solution जैसा कोई condition है. Question number 3 is under sorry मैंने third question पहले discuss कर दिया. Second question is from the solution given in the bracket water strong sugar solution, name the solution into which the cell were placed. Cell A is placed in water and cell B is placed in strong sugar solution. Okay, so let's write down the answer of these questions first. Let's discuss first all. Next question is name the pressure responsible for the movement of water from the root hair cell to the xylem. This is the root pressure. This we have not discussed yet, but for your information, root hair is created due to cell osmosis in the cortical cell. And name the pressure that help in the movement of water, that is a turgor pressure. Turgor pressure क्या होता है? अभी हम पहले आंसर लिखते हैं, फिर हम लोग सारे आंसर्स को डिस्कस भी कर लेंगे. फर्स्ट आंसर इज व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द कंडीशन सेल ए. ए के अंदर जो कंडीशन है वो है आपका टर्जिड कंडीशन, एंड इन बी द कंडीशन इज फ्लैसिड. ओके, और नेक्स्ट आंसर इज सेल ए इज सेल ए के अंदर हमसे पूछा है कि किस तरीके का सॉल्यूशन रहा होगा उसके चारों तरफ. इन सेल ए इसका मतलब वाटर है सेल के बाहर, एंड बी सेल के बाहर क्या है? शुगर सॉल्यूशन. बेसिकली हम यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं. बाकी सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर वाला जो सॉल्यूशन होगा दैट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. दैट्स थर्ड पार्ट इज under what condition the soil will the root hair will resemble cell A and cell B. Cell A कब होगा? When solution is hypotonic, and in B when solution is hypertonic. Next part is name the pressure responsible for the movement of water from the root hair to the xylem cell. It is a root pressure. Moreover, we are going to discuss root pressure in the next video, but just for your information, I just little bit explain here that root pressure के अंदर क्या होता है. root pressure के अंदर cell to cell osmosis होता है. In cell to cell osmosis, this is the one cell of cortical cell, this is the another cortical cell of root hair, and this is the another cell, and this one is your root hair. So when this root hair absorb water, it become turgid, and this because ये turgid हो जाता है तो ये पानी को अपने neighboring cell में यहाँ से यहाँ भेज देगा. Now this cell become turgid. ये turgid हो जाएगी और इसके पास में पानी कम है तो water will move from high to low. water यहाँ से यहाँ move कर जाएगा, and now this become flaccid and this become turgid. अब यहाँ से यहाँ जाएगा पानी. So this cell, say this is a cell 2, cell 2 become flaccid and cell 3 become turgid. तो बारी बारी ये सेल जो है वो expand और relax कर रही है, and because of that they create a pressure that is called root pressure. Okay, move to next question. Name the pressure that helps in the movement of water up the xylem of the root. Name the pressure responsible for the movement of water from the root hair to फिफ्थ में आप जो है मतलब टर्गर प्रेशर होता है. बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर क्या होता है? जो टर्जिडिटी की वजह से हुआ. व्हेन दिस सेल इज फुली चार्ज्ड विद वाटर, व्हेन दिस पर्टिकुलर सेल ये पूरा पानी से भर गई तो इट स्टार्ट्स टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द आउटर वॉल. बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाती है. दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाती है, टाइट हो जाती है. और जब तक ये टर्जिड नहीं होएगी इट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर टू नेबरिंग सेल. वो नेबरिंग सेल को वाटर
नहीं भेज पाएगी. So I have discussed a few questions, and there were a few more questions, I think so. Account for the wilted leaves. Lettuce leaves become crisp firm when placed it in cold water for a while. Uh, when we kept wilted lettuce leaves एक तरीके की सैलड की लीव्स होती हैं. और सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला. ओके, सो कोल्ड वाटर जो होता है, इट एक्ट्स एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. So when we kept cell in it, it helps in endoosmosis. Okay, the cell of the lettuce leaves get deplasmolite, or they become turgid and become turgid. Okay, this is your answer. So let me mark it in a red ink so you could understand easily. Define plasmolysis. Give one application of this phenomenon in our daily life. It is already given in your book, in your notes today. Next question is, what is the flaccid condition of a cell? Flaccid condition of a cell means when cell is not charged with water. When cell is not charged with water. Okay, this is the complete answer. And this condition occurs when there is a exosmosis. This condition occurs when the cell kept in hypertonic solution. Next question and last question is difference between plasmolysis and deplasmolysis. In plasmolysis, we keep the cell in a hypertonic solution. Wait, let me take one table. Plasmolysis. This one is deplasmolysis. Cell kept in hypertonic solution. Write down the complete sentence. मैं अभी आपको short में लिख ही देती हूँ. Cell kept in hypertonic solution. In this, cell kept in hypotonic solution. Right? In plasmolysis, cell become flaccid. In this, cell become turgid. फूल जाती है. It results due to exosmosis, sorry. And it's due to endoosmosis, inward movement होता है. So this is the complete explanation of today's exercise. And if you have any doubt, you are free to call, you are free to ask anything. Thank you, students.